Gujarat, renowned for its milk revolution, has also harnessed the potential of cattle for sustainable energy. Under the Swachh Bharat Gramin mission of Government of India, more than 7,400 individual biogas plants have been established in the last 2 years through the Gobardhan scheme. With the state government's active involvement and the central scheme's robust framework, biogas plants are not only addressing waste management issues but have also replaced traditional cooking fuels such as firewood, reducing indoor air pollution and respiratory diseases in villages like Mandli, located in Limkheda Tehsil of Dahod. Moreover, the byproduct, the organic slurry, serves as a high-quality fertilizer, enhancing agricultural productivity. આ યોજના અમને આપી તો અમારા માટે સારું ઉપયોગી એવી નીકળી અને અમે એનાથી ખૂબ એવું સંતોષ માનીએ છીએ કેમ કે અમારે આ ઘણી બધી અગવડ પડતી હતી ને એ હમણે સારું છે કેમ કે ઓલો ગેસ અમારે ભરાવા નહીં પડતો 2 મહિને 1500 રૂપિયા ખર્ચીને અમારે હમણે ખેતીવાડીમાં તો કેટલી આવક થઈ અમારે ઓલું દાડીએ એમ જાય તો 200 રૂપિયા મળે તો કેટલા દિવસ જાય તો અમને એ ગેસ ભરાવાનો લાભ મળી શકે તે અત્યારે તો અમે ઘરે ને ઘરે જે જમવાનું બનાવી લઈએ છીએ જે બાયોગैस लगवाने से जे एलपीजी गैस का जो सिलेंडर लाना पड़ता है इसका खर्चा भी कम हुआ है और हमारे खेत में जो प्राकृतिक खेती है इसमें भी फलद्रुप फायदेकारक है और जंगल में से कुछ लकड़ियाँ लानी पड़ती थी सब नहीं लानी पड़ती है हमारे घर में मिनिमम 5 व्यक्ति का जो खाने का भोजन है ना इधर से तैयार हो जाता है. The families receive financial aid covering nearly 90% of the installation cost, making it affordable even for low-income households. Additionally, local self-help groups and NGOs have played a pivotal role in mobilizing communities and ensuring the scheme's success. जो गोवर्धन का प्लांट लगता है उसकी कॉस्ट अराउंड 47,000 होती है जिसमें से भारत सरकार जो है वो SBM ग्रामीण के थ्रू 25,000 देती है 16,000 जो है वो मनरेगा के थ्रू फंडिंग होती है 41,000 जो है वो सरकार भारत सरकार देती है 5,000 जो रुपये हैं वो लाभार्थी व्यक्तिगत खुद रूप से देता है. सरकार ने कम्पोनेंट इसलिए भी रखा है ताकि अगर व्यक्तिगत कुछ पैसा दिया जाए तो लाभार्थी उस प्लांट को अपना समझेगा और उसका ज़्यादा ध्यान रखेगा और एक सेंस ऑफ ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी. As part of the mission, awareness campaigns and training programs have educated villagers on operating and maintaining biogas plants effectively. जैसे गांव है जैसे गोवर्धन योजना है उसमें 2018 से हमारे गुजरात में शुभारंभ हुआ था तो ये गोवर्धन योजना पहले हमारे 200 का लक्ष्यांक दिया था 9 गांव में हमने बायोगैस प्लांट स्थापित करवाए हैं तो बायोगैस प्लांट करवाते समय हमको ऐसे गांव में जाना पड़ता था तो वहाँ पे लोगों को समझाना पड़ता था कि बायोगैस प्लांट लेने से आपको ऐसे 2 महीने में जो 1000 से 1500 जो खर्च जो गैस सिलेंडर भरवाने में होते हैं वो खर्च भी नहीं होगा. साथ में जो चूल्हे पे वो धुआं से बहने वो बीमारी से बचे इसलिए उसका आरोग्य अच्छा रहे उसके हिसाब से वो भी उसको फ़ायदा समझाया. Gujarat's journey with biogas plants underscores the transformative power of integrated schemes and grassroots participation. The success of biogas plants in Gujarat sets a precedent for other states to emulate. The model not only aligns with the vision of a clean and green India, but also addresses the global call for sustainable development.